A warm welcome to the students of class 12th. Today I have decided to go to chapter 9 because chapter 9 contains some topics related to SQL, your earlier topic, and tables and databases. So first in this chapter there are some introductory tables shown here so that you can understand the structure of a table. And you can also understand that table, it is not necessary that table will have only 2 or 3 fields. We can add many more fields to a table. For example, this is the table about the shoe. Okay, so it is storing the information about various types of tables and various types of shoe made in the factory. I will go through the fields of this table. Field is first there is field, and field consists of code, name, type, size, cost, margin, and quantity. Then there is type, that means code. After code there is char 4, that means it has 4 characters. Then there is null, it is not a null value, it is not a zero value. And then there is key, which is primary key. Primary key is for the table, this for the code. For code we have kept code as the primary key. And then there is default, it is null, and extra, it is null. That means there is not any default setting. As you open the computer, there are so many settings which are default, which are from the machine itself. But here you are seeing no default setting is there. And extra, it is again a field and it is empty. So if we will go to name, it is variable character. It can have 20 characters or letters. Then there is null. Is it null? Sometimes it can be null. Then it is not a primary key. Then default value is null, and rest is this. Rest is blank. And then there is type. It is variable character of 10 letters. एंड देन देयर इज साइज, इट इज़ एन इंटीजर, क्योंकि जो शू का साइज़ होता है वो आप हमेशा 2, 3, 4 इस साइज़ में आप मेजर करते हो, या कभी 36, 39, 38 ऐसे भी हो सकता है, इवन 40, 42 ऐसे भी साइज़ होते हैं शू के. Then there is cost, it is decimal because it can be some rupees, point, after decimal point there can be paisa. And in margin there is again decimal up to 4 places, क्योंकि ये थोड़ा कॉस्ट से कम होगा क्योंकि जो आपका कॉस्ट होता है वो ज़्यादा होता है, और जो आप मार्जिन उस पर ऊपर से कमाते हो, जो आप गेन करते हो बेनिफिट, तो वो 4 ही डेसिमल प्लेसेस तक होता है. एंड देन देयर इज क्वांटिटी. क्वांटिटी, इट इज़ द इंटीजर वैल्यू विच इज़ ऑफ हैविंग 4 कैरेक्टर्स. And quantity here is an integer and its size is 4. Then there is field. We will go to customers table. Here it is customer code. It has 4 characteristics. Then there is name. It is variable character of 30 characters. Then there is address. Address चूँकि नेम से बड़ा होता है, एड्रेस में ज़्यादा एंट्रीज होती है, तो ये वेरिएबल कैरेक्टर है, 50 इसकी लेंथ है. एंड देन देयर इज़ फोन. इट इज़ अ वेरिएबल कैरेक्टर विच हैज़ लेंथ ऑफ 30. एंड देन देयर इज़ कैटेगरी विच इज़ अ कैर वैल्यू and its length is only 1. So same यहाँ पे आप देख रहे हैं, null है, की है, और की यहाँ पे कस्टमर कोड को रखा गया है, क्योंकि कस्टमर का जो कोड होता है, it is not in any case it cannot happen कि 2 कस्टमर्स होंगे या 4 होंगे, उनको एक ही कोड हम देंगे, तो फिर जब वो कोई क्वेरी भेजेंगे तो हम कैसे उनको डिफ्रेंशिएट करेंगे. ओके, सो ये जो होता है कस्टमर कोड, ये बिल्कुल डिफरेंट होता है. एंड देन देयर इज़ डिफ़ॉल्ट. डिफ़ॉल्ट में नल है और एक्स्ट्रा एम्प्टी है. इट इज़ कस्टमर्स टेबल. सिमिलरली ऑर्डर्स टेबल है. ऑर्डर्स में क्या है, ऑर्डर नंबर है, कस्टमर कोड है. ऑर्डर नंबर है, कौन सा नंबर है, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, और कस्टमर कोड कौन सा कस्टमर हमें ऑर्डर कर रहा है. देन देयर इज शू कोड. चूँकि हमारे पास ये एक शू की फैक्ट्री है, तो देयर आर हंड्रेड्स ऑफ टाइप्स ऑफ शू, तो शू को भी एक कोड दिया जाता है, तो वो उस शू को हम कोड से डिफ्रेंशिएट करते हैं एक शू को दूसरे से, और हमें जल्दी समझ में आता है कि शू का कोड क्या है, कस्टमर ने कौन सा कोड दिया है. जैसे आजकल आप ऑनलाइन देखते होंगे, अगर आप कभी ड्रेस परचेज करते होंगे ऑनलाइन, तो वहाँ पे आप देखते होंगे कि वहाँ पे आपको एक कोड आता होगा हर एक ड्रेस का, तो आप कोड से वो उसको ऑर्डर प्लेस करते हो.
देन देयर इज ऑर्डर डेट, यानी कि किस डेट को आपने ऑर्डर किया, एंड देन देयर इज टारगेट डेट. टारगेट डेट मीन्स द डेट ऑन विच यू विल रिसीव द शूज़. और टाइप जो है यहाँ पे, आप ये मैं रिपीट नहीं करूँगी, ये ऊपर आपने देखा है, जैसे ऊपर टाइप है तो इसी तरह इसमें भी है, ऑर्डर्स में भी. और देन देयर इज शू. देखो बच्चे, यहाँ पे कोड जो है, अब ये इसमें डेटा एंट्री हो गई है. दिस इज द डेटा स्टोर्ड इन दीज टेबल्स. और जब हम डेटा स्टोर करते हैं, जो ऊपर के टेबल थे इसमें हमने सिर्फ वहाँ पे देखा था, हमने यहाँ पे फील्ड्स एक साइड से लिखे थे, टाइप हेडिंग दी थी. लेकिन यहाँ आप देख रहे हैं कि अब अगर हम कोड ले रहे हैं तो कोड में हम 1001 से 1204 तक ले रहे हैं. इट कैन बी डिफरेंट, जैसे पहला 1001 है, लेकिन दूसरा जो है ये 1002 है, और 3 है, फिर 1112 है, 1011. इट इज़ नॉट नेसेसरी कि ये कोड जो है ये रिदम में होगा. देन देयर इज़ नेम. नेम जो है, नेम आप देख रहे हैं, स्कूल कैनवास शूज़ होते हैं, लेदर शूज़ होते हैं, गलेक्सी भी क्वालिटी है, ब्रांड है, ट्रकर है एक ब्रांड. देन देयर इज़ टाइप, ये कौन सा टाइप है, स्कूल शूज़ है, ऑफिस शूज़ है, स्पोर्ट्स शूज़ है. ओके. देन देयर इज़ साइज. साइज इसने ये एक कैरेक्टर में दिया है. कॉस्ट मैंने आपको कहा था ये डिसमिल में होगा. और मार्जिन जो है, मार्जिन तो इसने बहुत कम लिया है, 2.001 शूज़ में ले रहा है. और क्वांटिटी जो है, क्वांटिटी यहाँ पे है 1200, मतलब पहले शूज़ के टाइप के इसको 1200 पीसेस चाहिए. ओके. तो दिस इज़ द टेबल. देन वी आर गोइंग टू कस्टमर्स टेबल. तो कस्टमर्स टेबल में इसने अब यहाँ पे